Ji, Dr. Zubair, regarding short case and some insight towards that virtuality. You can unmute. Sir, unmute कर लें अपना mic. Assalamu alaikum ji. Yes, now we can hear. Can you listen to me? Assalamu alaikum everybody. Ishaq sahab, Bashir sahab, Fawwad and Hashim and everybody. I can see about 150 participants there in the Zoom meeting. Just as Bashir sahab has told you, it's a new faculty and it's a very vibrant faculty. You know, soon you'll be seeing so much of changes which this faculty is likely to bring. But obviously, as you know, worldwide, this COVID pandemic, this has really changed the scenario. और सबसे बड़ा चैलेंज हमें वो जो है फैकल्टी को नहीं आते साथ ही जो है ये एग्जाम स्प्रिंग ऑफ 2020 का एग्जाम जो है उसका क्लिनिकल का लकीली हमारा रिटन एग्जाम हो चुका था रिजल्ट आ गए एंड नाउ द कैंडिडेट्स आर वेटिंग फॉर द क्लिनिकल पार्ट ऑफ द एग्जामिनेशन जिस तरह बशीर साहब ने कहा टॉक्स वैसे ही होंगे और ये लॉन्ग और शॉर्ट केसेस दैट्स अ डिलेमा और इसाक साहब भी जिस तरह बात करेंगे और मैं भी और you know we discussed with the Department of Examination a lot what to expect and what not to expect. The problem was obviously for the short or long cases whenever you bring, you know, we bring more than, you know, अगर हमने 10 cases रख रहे हैं तो we bring about 20 to 25 और उनके साथ उनके attendants भी आ जाते हैं and you know they are coughing, they are distinct, you never know. We discussed with the CPSP regarding the COVID में test सबके हो जाए वो possible नहीं और दूसरी जो प्रॉब्लम the other problem was regarding the examiners जिस तरह बशीर साहब ने कहा even for the faculty meetings the examiners were not filling, you know, most of them are plus 50 and you know they as per government directives also they don't want to be exposed, which is rightly so because we have lost so many of people. MRCP FRCS वाले जो है उन्होंने September तक postpone कर दिया तो ultimately you know after a long discussion we thought that the virtual examination is the way forward as it's happening. ये भी suggestion आई कि हम written दोबारा ले लें मतलब जो spring autumn session का written ले लें और साथ ही इकट्ठा कर लें हमें और maybe you know October November तक जो है मौसम अच्छा हो जाए but you know with November and December coming in Punjab especially सर्दी हो जाती है you never know कि एक flu की और कोरोना की जो है एक और wave जो है यहाँ आ जाए so it was not examination center से बात की they also thought कि नहीं दो एग्जाम्स को मर्ज नहीं करना दूसरी प्रॉब्लम आई कि ये कब तक ये स्टार्ट करें जिस तरह यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस जो है बंद है इसी तरह पार्ट ऑफ इट्स एप्लीकेबल टू सीपीएसपी एज वेल जिस तरह अब तक करने तमाम यूनिवर्सिटी कॉलेजेस के लिए 15th of September फेडरल गवर्नमेंट ने जो दी है चीज के आप तब तक करें तो दैट वाज अ प्रॉब्लम विद सीपीएसपी आल्सो और इट वाज अ बिग डिसीजन टू मेक बिकॉज इट्स नॉट ओनली कार्डियोलॉजी इट्स 70 डिसिप्लिन्स व्हिच सीपीएसपी हैज टू टेक ओवर उसमें उन्होंने कम्युनिटी मेडिसिन वगैरह कर लिए थे जहाँ के पेशेंट्स इंटरेक्शन नहीं थी बट जस्ट लुक थिंक ऑफ दिस पल्मोनोलॉजी जस्ट थिंक ऑफ ईएनटी जस्ट थिंक ऑफ आई जहाँ के बहुत क्लोज पेशेंट इंटरेक्शन होती है और ऑब्वियसली नोबडी वाज विलिंग एग्जामिनर्स वर नॉट विलिंग एंड यू नो द सीपीएसपी वाज नॉट अफोर्डिंग इनफ और क्योंकि क्या आप किस तरह अरेंज कर सकते हो कि कोविड के टेस्ट कराएं एंड स्टिल as you know कि कोविड पॉजिटिविटी 50-60% है still you can have a covid PCR negative patients sitting with you and you may catch them. So ultimately, you know, CPSP Council has, the Executive Council of CPSP has decided, or as you must have got messages from the Controller Examination Sharif Sahab, or yeah, Facebook, WhatsApp पे भी उनकी तरफ से messages throw हुए हैं कि ultimately CPSP Executive Council has decided for this interactive virtual examinations. Just because of the patients, the candidates and the examiners, all of them. और क्योंकि कोविड का अनलाइकली है कि अगले 4-6 महीने तक शायद ना ठीक हो सिलसिला ठीक अप डाउन होता रहेगा तो that's there we are. So as you have told me to cover the short cases, obviously that's the most difficult thing which CPSP is facing right now. इसाक साहब का जो है वो मैं थोड़ा सा आपको इंटरेक्टिव और जो वर्चुअल का आपको पैटर्न अभी मैं स्लाइड्स में दिखाऊंगा ताकि कैंडिडेट्स को पता चल जाए किस तरह व्हाट डू दे मीन अबाउट इट बट यू नो इट्स जहां तक आपका क्लिनिकल का पार्ट है फर्स्ट स्टोक्स जिस तरह बशीर साहब ने कहा उसमें कोई फर्क नहीं होगा तो फर्स्ट डे विल बी स्टोक्स और उसके अंदर आपके वही जिस तरह एको क्लिप्स 10 एंजियो क्लिप्स और बाकी 20 स्टेशन जो हो गए ईसीजी एक्सरे एंड सीटी एंड ऑल दैट So there'll be nothing new. सिर्फ ये है कि आपकी डिस्टेंसिंग थोड़ी सी बढ़ा दी जाएगी
or obviously you'll be asked to wear the mask and all that, so that's not a problem. जहां तक लॉन्ग केसेस का ताल्लुक है, इसाक साहब अभी बात करेंगे, वहां भी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है. You know what they are going at is they are going at with virtual patients, or virtual patient means कि you'll be given a case scenario और आहिस्ता आहिस्ता आपको एक हिस्ट्री दी जाएगी और उसके साथ सारा उसके डॉक्यूमेंट्स, पेशेंट की लेट्स से फाइल आपके पास पड़ी है और आप जो है पेशेंट्स के कैंडिडेट को एक केस सिनेरियो देंगे और उसके बाद जो है वो आपको पूछेंगे व्हाट नेक्स्ट, व्हाट यू वुड लाइक, एंड फिर वो आपको करता जाएगा और आपने एक मार्किंग स्कीम रखी होगी जिस तरह के अभी मैं स्लाइड्स पे आपको दिखाऊंगा, एंड देन यू गो विद इट और उसको आप स्कोर करते चले जाओगे. सो इट्स मोस्टली हिस्ट्री ओरिएंटेड, इट्स मोस्टली इंटरैक्टिव और उस पर बहुत ज्यादा जरूरत है आपको. यू शुड बी वेरी स्ट्रांग इन एकेडमिक्स, गाइडलाइंस एंड एवरीथिंग, क्योंकि वैसे आपको लॉन्ग केस में 1 घंटा मिलता था, आधा घंटा हिस्ट्री एंड आधा घंटा वो, आप इसमें समझ लें कि आप 1 घंटा एग्जामिनर्स के साथ मोस्ट प्रोबेबली जो कर रहे होंगे. अब आपने जो मुझे शॉर्ट केसेस का कहा, शॉर्ट केसेस पे दैट्स द मेन प्रॉब्लम, यू नो, व्हिच वी आर फेसिंग. लॉन्ग केस जो है दैट्स वन लॉन्ग केस. शॉर्ट केसेस में इनिशियली वी यूज्ड टू हैव 4 शॉर्ट केसेस और उसके अंदर हमें 10-10 मिनट का एक शॉर्ट केस होता था. 5 मिनट्स ऑफ क्लिनिकल एग्जामिनेशन, 5 मिनट्स ऑफ द वाइवा, और उसके बाद देन यू मूव ऑन टू नेक्स्ट स्टेशन, देन स्टेशन 3 एंड देन स्टेशन 4. सो अल्टीमेटली यू हैव टू गो फॉर 4 stations, 10 minutes each, 5 minutes for clinical examination, 5 minutes for viva. But where do we go from here now? You know, वहाँ तो वर्चुअलिटी हो सकती है. लॉन्ग केस में आपके सिनेरियो दे दें, कार्ड उनको पकड़ा दें एंड देन यू मूव ऑन, और बाकी एक वर्चुअल पेशेंट मौजूद है, उसकी ईसीजी भी हैं, आप इनसे भी दिखा दें. शॉर्ट केसेस वाइज वी आर स्टिल, CPSP is still finding the way, और जिस तरह बशीर साहब ने बताया, फैकल्टी ने पूरी हमारी एक कमेटी बनाई है जो कि शॉर्ट केसेस पे स्पेशली फोकस कर रही है, हाउ टू गो अबाउट दैट. देयर वर डिफरेंट सजेशंस, और उसमें यह था कि हार्ट साउंड लाइब्रेरी जो है वहां से हार्ट साउंड्स लेके आए, मोहम्मद की लाइब्रेरी हो उस तरह लेके आए, फिर हार्वे जो है उसके अंदर एक जिसका सिमुलेशन सॉर्ट ऑफ अ डिवाइस है उस तरह उसको लेके आए, या कॉम्पिटेंसी बेस्ड असेसमेंट की जाए. So we are there interacting with the CPSP on this, or they are waiting for the cardiology faculty to give their recommendations. बहुत से कैंडिडेट्स क्योंकि सब मौजूद है, ऑब्वियसली उनको डेफिनेटली ये सोच रहे होंगे कि अभी तक ये खुद किसी रिजल्ट पे नहीं पहुंचे रिगार्डिंग शॉर्ट केसेस, तो हमारा क्या बनेगा. तो रेस्ट एश्योर्ड कि योर इंटरेस्ट इज आवर प्राइमरी एम टू प्रोटेक्ट दैट. हमने फैकल्टी ने भी और उनको खास तौर पे यूनानिमसली फैकल्टी ने कहा था कि कोई भी नया सिस्टम लाने से पहले इट शुड बी नॉट ओनली द कैंडिडेट्स बट द एग्जामिनर्स शुड आल्सो बी ओरिएंटेड. कि उनको ये नहीं होना चाहिए कि आप में कहे कि जी नेक्स्ट वीक जो है वर्चुअल एग्जाम ले रहे हैं, आप जिस स्कीम से आ रहे हैं पहले एग्जामिनर्स की भी ओरिएंटेशन लें, उनके ओरिएंटेशन वर्कशॉप लें, जूम वर्कशॉप्स लें, ताकि एग्जामिनर्स को भी पता चले कि किस तरह आपने अकॉर्डिंग टू द न्यू सिस्टम आपने किस तरह एक्रेडिटेट करना है, मार्किंग सिस्टम क्या होगा, किस किस चीज के कितने मार्क्स आपने देने हैं और हाउ वुड यू प्रोसीड. और उसके बाद कैंडिडेट्स के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि कैंडिडेट्स सारे के सारे जो है पिछले सिस्टम ऑफ एग्जामिनेशन के हिसाब से, इसाक साहब आपको पता है तैयारी की हुई है, उनको पता है लॉन्ग केस ऐसे करना है, शॉर्ट केस ऐसे करना है, सडनली चेंज हो जाए और उनको बताया भी ना जाए व्हाट्स द चेंज एंड हाउ वुड यू नो, तो इट विल बी डिफिकल्ट फॉर. सो फॉर मैं फार्म्यूला से भी रिक्वेस्ट करूंगा, सून विल हैव मतलब अभी आपको मैं वर्चुअल की कुछ स्लाइड्स दिखाता हूं, थोड़ा सा तो आइडिया लॉन्ग केस वाइज हो जाएगा इनको कि किस तरह चलना है, बट शॉर्ट केसेस वाइज सून विल बी हैविंग व्हाट वी आर डिमांडिंग. और उसके बाद डेफिनेटली विल बी आस्किंग CPSP एंड द एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट टू गिव सफिशिएंट टाइम, एटलीस्ट 30 days तो हो, ताकि कैंडिडेट्स को ओरिएंटेशन कोर्सेज उन्होंने करने हो, जूम कोर्सेज हो, ताकि उनको पता चले हाउ टू मूव ऑन. So let's go on with slides. I'll be showing the slides we received from the examination department, CPSP. Okay, what do you mean by this virtual clinical examination? Can you see all the slide? You can move on to slideshow. Yeah, now Yes. it's very clear. Yes. Can you see this? Yes, we can see. So let's go on to a few slides just to orientate you what does this virtual clinical examination means, you know. So virtual clinical examination, that is VC employs virtual patients in clinical examination instead of real patients. That is itself evident.
Then the interactive paper patients reveal patient condition and work up phase wise. You know, examiner will bring a case scenario to you and maybe in the form of a card or whatsoever, just make a history likhi hogi, and the examiner will pose questions to the examinee after description of each phase. Then student can ask questions about the patient condition, investigation, or response to the therapy. Then examiner responds verbally or furnishes results. And answers are scored phase-wise on a key. You meaning by कि अगर आपको एक हम कार्डियोलॉजी लेट्स टॉक ऑफ कार्डियोलॉजी आपको एक केस करियर हिस्ट्री देते हैं तो उनसे पूछा जाएगा आप हिस्ट्री में और क्या चाहेंगे, वो कुछ मांगेगा फिर और हिस्ट्री में क्या आपके लिए इंपॉर्टेंट चीज है, फिर देन वी मूव ऑन टू इन्वेस्टिगेशंस, क्या इन्वेस्टिगेशंस आप चाहेंगे, वो आपको ईसीजी कहेगा, एक्सरे कहेगा, एंजियो कहेगा, व्हाटएवर यू नो, उस तरह करते हुए और यू नो रूटीन टेस्टिंग से हम आगे चले जाएंगे और फिर उसके बाद जो है what do you find on this ECG, what do you find on this X-ray, what do you find on this angiography, and obviously then treatment strategies and all that. What's the updates, what are the recent trials happening, you know, is tarah karke, this is how we'll move on. The advantages of this virtual examination is broader coverage of curriculum, patient safety and inconvenience, non-compromised, case leakage from hospitals that is avoided, whether it's a long case or short case. It is inexpensive and most importantly, COVID-19 SOP, including social distances, can be practiced. So let's take an example. और आप देखिए इसमें 10 मार्क्स अगर रखे हैं तो लेट्स से हमने एक हाइपोथेटिकली इसको डिवाइड किया कि फेज 1 it will be, let's say it's consistent of 3 marks. A 8 years old man presents in surgical outdoor with a swelling. This is a not a cardiology scenario, but the CPS provided us with this, with a swelling in right inguinal region since last 2 weeks. Now, if you want that the student should collect some more information on history and perform focus examination, you may ask what additional points you would like to gather on history and what focused clinical examination is needed and what are the expected findings. अब जिस तरह एज एग्जामिनर्स वी नो कि हम जब टॉक्स भी लेते हैं तो हमें कीज दी जाती हैं, सो जब हमें मार्क डिस्ट्रीब्यूशन दी जाएगी तो एग्जामिनर्स को कीज भी दी जाएंगी कि दीज आर द 2 क्वेश्चंस यू हैव टू आस्क, and if they answer accordingly you mark according to the 3 marks allocated. Phase 2, after the candidate has finished his findings on history examination, you may ask what is the likely diagnosis and why, what is your plan of management, and what investigations you would like to order and why. So you know, for a coronary case, what's your diagnosis and why, how do you justify this diagnosis, how would you proceed further investigation and management, and you know investigations in the order of priority and the management plan, and carrying 3 marks. Then phase 3, if the candidate orders some investigations such as chest X-ray, for us angio, and say you know bronchiectasis or acute coronary syndrome, and then we may ask what do you find on the X-ray. For a cardiac case, we will see say what would you find on this angiography and how would you proceed, what in your management plan you have. Let's say if we allocate this as marks 2, if the candidate reads the X-ray or the angiography correctly, then I will refer him to the physician for the treatment of bronchiectasis, or for a cardiac case, I will say whether the patient needs a medical management, angioplasty, or the surgery and why. You know, then this component may be carrying 2 marks. Then phase 4, 2 marks. Now it may, hypothetically, now it may be revealed that the physician after treatment has declared infect and you decide to operate upon him or do an intervention. You may ask what specific surgical procedure will undertake and why, and what interventional procedure we will take, let's say, for a cardiac patient. So that's how, you know, we'll build on that, and we will explore, we'll having all data, tamam investigations, इसी से लेके routine से लेके angiography तक हमारे पास होंगी, let's say for a cardiac case, और उसके बाद हम एक एक करके रिवील करते जाएंगे और कैंडिडेट से इंटरेक्टिवली हम आगे जाएंगे और इसी के अंदर हम लेटेस्ट अपडेट्स, गाइडलाइंस और ट्रायल्स भी पूछ सकते हैं. So that's how interactive virtual long case will end. What can be assessed? Cognitive skills, yes. Analytic skills, problem solving skills, critical thinking skills, and decision making skills will be evaluated. And non-cognitive skills like presentation skills, that is the communication skills, will be presented and advocated. And what can't be assessed? So इस virtual के नुकसानात क्या चीज नहीं हम assess कर सकेंगे? That will be the psychomotor skills, interviewing or history taking, physical examination, procedural skills, and medical professionalism. Regarding short cases, obviously, you know, short case, अच्छा इसमें जो interactive सबसे बड़ी बात है, आपको पता है कि
शॉर्ट और लॉन्ग केस में बुनियादी फर्क ये है कि लॉन्ग केस में तो आप हिस्ट्री ले रहे हैं, आप डिस्कस कर रहे हैं, और पेशेंट से डिस्कस करें, यू कैन आस्क एवरीथिंग, कि मुझे इसी दिखाए. शॉर्ट केसेस इज मोर regarding the physical examination, the uh, exposure to the patient. You are not asking anything to the patients. You are not supposed to ask the examiner to provide you the data as in long case, and just you go with the physical examination, उस पे आप evaluate होते हो, and then you give a diagnosis और उसको फिर justify करना होता है. That is a short case otherwise. So here we are working. Obviously physical examination component short cases में miss हो जाएगा, तो उसमें मे बी हार्ट साउंड्स और उसके हार्ट साउंड्स लाइब्रेरी एंड ऑल दैट वी आर ब्रिंगिंग, बट ऑब्वियसली मेक श्योर कि आपको प्रॉपर टाइम मिले. दूसरी चीज है कि जो भी कुछ आएगा, वी ऑलवेज चेक कि इट इज कि जब एग्जामिनर्स खुद सेटिस्फाई हो जाएंगे कि कॉम्पिटेंस लेवल ऐसा है कि यू शुड बी गिवन दैट, और आप यू शुड नॉट बी एट अ डिसएडवांटेज नॉट गेटिंग अ रियल पेशेंट, तभी वो चीज हम ओके करेंगे एंड देन इट विल बी कम्युनिकेटेड टू यू. थैंक यू वेरी मच. ओवर टू यू. For nicely covering and especially giving us. Can you stop sharing the slides? Then we'll back to the gallery mode. Yeah. We are just stopping. Okay. So thank you, Dr. Zubair. Very nicely you have given an idea towards that virtuality. And I think since in virtual aspect you have covered both long and short. So what I would suggest, Professor Ishaq, for that golden pearls, whether what kind of exam it is, if you have those golden pearls with you, what kind of things you needed, no matter जंग कौन सी हो, दुश्मन कौन सा हो, आप सबको फतह कर सकते हैं.